बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा किया, थैंक यू। आप अभी अपने टाइम दे दिया। मैंने कहा लेट्स जस्ट गेट डन विद इट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ बिल्कुल, जब मौका मिले one should go as fast as possible. सो Life is too short. ये भी साइड है आपकी फिलोसॉफिकल एंड Oh yeah. स्पिरिचुअल। अरे 2 साल बंदा सबैटिकल पे और क्या करता है? सही है। फिलोसफी करता है बस। आपको स्क्रीन आ रही है नजर? अभी आई है। हाँ। सो आइडिया यही है कि जो पिच डेक में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस फीडबैक, वो मैंने अपडेट किए। तो आप इस पे मुझे अपना फीडबैक इस सेशन में देंगे, तो फिर देन वील मूव ऑन। ठीक है। ये क्या किसके लिए बन रही है अब ये? क्लाइंट के लिए? दिस इज ये क्लाइंट के लिए बन रही है क्या? क्या? द आइडिया इज कि 1 घंटा क्लाइंट से टाइम लेके उसके अंदर ये उसको प्रेजेंट करके, एंड द आइडिया इज कि उसको फ्री ट्रायल जो मैं दे रहा हूँ उसके लिए उसको साइन अप करवा देना। ठीक है। ठीक है। सो एंड बेसिक हु सारी इज द चीज। क्लाइंट? टारगेट कौन है? टारगेट में जिस तरह अभी हमने पिछले में जिक्र किया था, जिस तरह एक आपने जिक्र किया था, आपका कोई स्वीडन में है, हम्म, आपका कोई कांटेक्ट है या और कोई वो कांटेक्ट्स हैं? तो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, बट हमारा साइटेक का ओवरऑल आईसीपी क्या है, यानी आइडियल कस्टमर कौन है? आईटी की कंपनी? आईटी की कंपनी बिल्कुल, जो छोटी कि बड़ी? 200 से 500 एम्प्लॉइज की। और अमेरिका में कि स्वीडन में? अमेरिका में। डजंट मैटर। अमेरिका ठीक में। है, क्योंकि मीटिंग स्वीडन ये वाले के साथ। हाँ, क्योंकि बट वो एनीवे डजंट मैटर। ठीक द है। आइडिया वाज कि जस्ट टू यू नो और उनका क्या मसला हल करेंगे हम? उनका मसला ये हल करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो मैंने चीज यहाँ पे डाली है। वो ये 3 चीजें डाली हैं कि हम आपके पैसे बचाएंगे इन 3 चीजों से, 4 चीजों से। 2 चीजें तो है कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो आप अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ना, उसके अंदर 5% डिक्रीज आएगा पर ईयर के हिसाब से। ये मैंने हम्म। मुख्तलिफ इसमें डेटा निकाले, स्टेटिस्टिक्स निकाली हैं। बाकी कंपनीज तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं क्लेम। तो मैंने उसको कह लें कि 75% कट के करके ना 5% लिखा है कि 5% आपका हेल्थ केयर कॉस्ट पर ईयर आएगा। टर्नओवर आपका 3% से रिड्यूस करेंगे पर ईयर के हिसाब से, जो कि एडिशनल आपको आपकी कॉस्ट बट सेव करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाँ, डू हाँ। यू नो ऑफ एनी कंपनीज दिस साइज, 100 to 200 IT companies? हाँ, हाँ। Do you know of any people like this? नॉट पर्सनली, नो। You do. नॉट You इन द work with us. यूएस। No, not. I mean, so Allied is a US company हाँ, with हाँ। 200 employees. So you know a company. यस। हाँ। So इस कंपनी में किस बंदे से आप बात कर रहे हो? आईसीपी तो हमने कंपनी, आपने मुझे कहा ना, बट आईसीपी तो एक हुँ, बंदा होता है। कंपनी तक तो हम पहुंच गए, 100-200 लोगों की आईटी कंपनी में। हुँ, सीईओ से बात करनी है हमने। हुँ। Should we सो address him? I think for a 200 company, maybe. Or should we talk to somebody in HR? सो दैट्स द आइडिया कि हम स्टार्ट करेंगे। हम जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो एचआर होगा, क्योंकि Have you एचआर। researched whether companies this size actually have an HR? जी, मैंने जो सर्च किया उसमें एचआर का उनके पास कोई ना कोई होता है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप रोल होता है, या वो इतना, यानी डज ही, वुड यू एक्सपेक्ट you know Brando the Mexican HR assistant to know what his turnover rate was last year? अ, नहीं, लेकिन आई कैन गिव देम एग्जांपल्स। क्योंकि मेरे पास मैंने कुछ डेटा निकाला हुआ है जिसमें रफ कुछ एस्टिमेट्स हैं। हम्म। हम्म। सो फॉर एग्जांपल अगर टर्नओवर जो है वो, अगर 200 एम्प्लॉइज़ की कंपनी है ना अमेरिका के अंदर, तो अगर उनका लेट्स से कि 10% भी टर्नओवर होता है ना पर ईयर के हिसाब से, तो उनका 50 टू 60,000 डॉलर जो है वो उस पे वेस्ट होता है। तो अगर हम वो 10% से 7% ही कर देंगे ना,
तो उनका बच जाएगा तकरीबन 20-1,000 डॉलर हम उनका बचा सकते हैं। No, no, I understand the value हुँ, proposition. What I'm saying is that sometimes you're selling something to someone that he doesn't realize he has a problem. या, So या, पहले आप या, जाके उसे कहते हैं बेटा देख ले कि you have a problem. And हुँ, he's like, oh really, do I have a problem? It takes many months for him to accept that he has the problem. हुँ, And then you say, अच्छा, let me now fix the problem. That is not the ideal sales cycle. Like you want to pick problems जिसकी awareness पहले से मौजूद हो. हुँ, अगर उसको पता ही नहीं है ना कि उसको कोई मसला है, या हुँ। एटलीस्ट जिन अल्फाज में आप बयान कर रहे हैं उन अल्फाज में वो उस मसले को नहीं पकड़ सकता, तो फिर आई थिंक यू विल हैव अ आई थिंक प्रॉब्लम। नहीं, आई थिंक ये जो स्टार्टिंग हमारा जो है, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन कैन रिलेट टू दैट। जितने भी लोग आईटी इंडस्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल एचआर असिस्टेंट लेते हैं, उसको खुद कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे होंगे। तो यूजुअली हमारा जो मेरा जो टॉपिक होता है साइकोलॉजी का, इट्स ईज़िली रिलेटेबल टू एवरीवन। हाँ, जो बिज़नेस साइड पे बिज़नेस प्रोपोज़िशन ऑब्वियसली वही अंडरस्टैंड करेगा कि जो हू इज़ रनिंग द शो। तो यूजुअली व्हेन आई टॉक अबाउट लेट्स से बर्नआउट, या आई टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, या आई टॉक अबाउट जॉब सैटिस्फैक्शन, तो जिसको भी मैं प्रेज़ेंट करूँगा, अगर वो अगर नौकरी भी कर रहा है, वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से समझेगा। तो किसी न किसी को हर किसी को किसी न किसी पॉइंट पे कोई न कोई साइकोलॉजिकल इश्यू लाज़मी होता है। तो दिस इज़ अ ईज़ी रिलेटेबल टॉपिक। अच्छा, कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। मुझे मैं आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन मेरा जितना ऑब्वियसली आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं अपना नहीं, आई एक्सपीरियंस। आई एक्चुअली एग्री कि होता है, हुँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज विल ही एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज कि उसको है, एंड दैट ही नहीं, नीड्स टू नाउ फिक्स इट, उसको है कि नहीं, द उसके कंपनी विल एम्प्लॉइज़ को तो फिक्स इट। डेफ़िनिटली है ना। मतलब so like let me put on my engineering hat. I would say, and I'm intentionally being an asshole here, being the ओके। skeptic. ओके, Uh, I would say, like, at what point do you define somebody has a psychological issue? सब टेढ़े हैं थोड़े थोड़े. या। How do you know कि कोई psychological issue बन चुका है? सो साइकोलॉजिकल इश्यू तब बनता है व्हेन इट्स यहाँ पे स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, व्हेन इट स्टार्ट्स गिविंग यू फंक्शनल इम्पेयरमेंट। सो फॉर एग्जांपल द डेली टास्क दैट यू गोइंग थ्रू, when you start having hindrance in them, for example, you can't focus on your work, yeah, your attention is being diverted, you want to focus on your work but you're thinking about something else, or you're planning कि यार मैं कल छुट्टी कर लूँ, I don't want to come tomorrow because I just need to get in the right headspace, things like that. So Okay, when you yeah, we have this like very aggressive work environment. This is mm, not a place for the weak of mind. If they can't handle the heat, don't be in the kitchen. We have an up or out policy. You know, like Accenture and the big five, they have an up exactly. or out Okay. policy. So my rebuttal for that is, for example, if somebody is, for example, let's say he's weak-minded and he can't cope with the work, or what would you plan to do? Would you like to fire them? Yes, they have no So place in if this you organization. so this is where the turnover comes in. If you like to fire them, that's gonna cost you more. But if you invest in their mental health, that's gonna cost you less. Because if you're gonna fire them, then you have to post an ad, you have to advertise that job, then you have to hire the new employee, then you have gotta train them. So that will cost you more. In comparison, if you invest in his or her mental health, that will cost you less. But you may take months trying to fix that person who is dysfunctional during that time. So 3 महीने उसको बेंच पे बिठाने से बेहतर नहीं है मैं फारिग करके नया रख के भुगत लूं. नहीं, बट हमारी स्टैटिस्टिक्स ये शो करती हैं कि हमारा 70% ऑफ द एम्प्लॉइज who take our session, they start feeling improvement in the first 3 sessions. अच्छा. On the work, I can see and calculate an improvement. Uh, so it depends, okay, how you are calculating work, but one thing that we sure, if they are taking lots of days off because of their health condition, that will significantly start to reduce within the No, first. nobody can take a lot of days off. We have 7 days off in the year, including Christmas. This Hmm, is California policy. So if hmm, anybody takes more than that, we let go of them anyways. hmm. Yeah, that makes absolutely sense. But you will start noticing an improvement within their productivity. Okay. What metrics in productivity will I see an improvement in?
So, this will be an open for discussion. You can tell us that what matrices that your companies follow, because productivity We have matrix. only one metric. We measure their utilization. How many of their hours can they bill? Yes, hours they can exactly. So if they are mentally more aligned with themselves, they will be able to put in more hours. Yeah, I would say that the billability has more to do with how much work we can actually give them, Yes. uh, and things of Mm, that nature, not necessarily their efficiency. exactly. And how much, and the most important thing is how much hours that they can take. And obviously, for instance, if a person does not have good work-life balance, then they can't take too much work on them, because they need to straighten up their work-life balance first. And once their Mm, work-life balance is straightened up, they will be able to cater more hours, because we will guide them the techniques that will allow them to spend good time with the family as well spend more time at work. Will help mm, them with their time management. mm. I think there's a certain kind of owner that will react to this. Somebody who's empathetic with his employees, जिसके लिए Hmm. employee happiness important है. But I Okay. can imagine a lot of the people that I interact with, they're very क्या कहते हैं uptight and unemotional, very Hmm. rational and heartless. Hmm. Businessman heartless होता है type of characters होते हैं. So they're like, yeah, this sissy stuff has no business here. If you can't take the heat, leave. Hmm. But there will be some people who will react to this. Chalo, acha, okay, let me stop being an asshole. Let me pause being an asshole. I can't help myself for too long. नहीं, ये अच्छी है। मैंने ना वो जब की ना अपनी ये अपना पिच दी उनको, ये नहीं जो अपना कंपटीशन गवर्नमेंट में था। वाला। एग्जैक्टली। तो आई गॉट टू द मैं फाइनल स्टेज में चला गया था, फिर उसके बाद जो है ना, एनीवे, तो सिफारशी उसमें आ ना, गया। सॉरी, सिफारशी आ गया। नहीं सिफारिशी नहीं आ गया। आई थिंक कि वो ऑब्वियसली वो मेजर चीज थी कि आपने एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है अपने साइटेक से। तो मैंने कहा भाई रेवेन्यू मैंने साइटेक के नाम से नहीं जनरेट किया, अपने नाम से जनरेट किया है, अभी मैंने करना है। तो एनीवे, बाकी जितने थे ना वो लोग जो पिचेस दे रहे थे, तो उनको ना वो सही ग्रिल कर रहे थे, जो जो भी वो बैठे हुए थे वहां पे। तो जब मैंने प्रेजेंट किया ना, तो वो उनको उनको कोई जो भी सवाल दें, तो आई हैड एन आंसर फॉर इट। एंड मेरी मेरी बेगम ने पूछा कि, मैंने कहा मुझे ना एक्चुअली मैंने उमर भाई को बहुत ज़्यादा दी हुई हैं अपनी प्रेज़ेंटेशंस, तो वो उनके लेवल का वो थे ही नहीं, वो तो उनके ग्रैंड बेबीज़ के लेवल के थे, उन्होंने तो कोई सवाल ही नहीं पूछा, मुझे मज़ा ही नहीं गंदे आया। गंदे सवाल सारे हो चुके हैं मेरे। इतना नेगेटिव आदमी मुझे पहले पहले मिल चुका है, इससे कहीं ज्यादा नेगेटिव आदमी। मैंने कहा उनके सवाल तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुए। हाँ, सही बात। सो है। सो अच्छा जी। इसके अंदर शैल आई जंप टू जो मैंने चेंजेस किए हैं, या वुड यू लाइक मी टू गिव यू एन ओवरऑल व्यू? No, no, do your normal flow. ठीक है। Let's hear it. Okay, so SciTech. So the idea is that whenever I'm starting the pitch, I'm gonna start with my own experience. That I'm an organizational and clinical psychologist, and for the past few years, I've been working with IT companies across, in different cultures. And while working, I recognized a similar pattern of difficulties that IT employees faces, which uh, which helped me initiate this SciTech. So according to our statistics, that 70% of IT professionals, they suffer from some sort of psychological, psychosocial issues. Most prevalent being work-life balance, burnout, isolation, imposter syndrome, and other issues. So we bring solutions to all these problems by uh, giving help to these employees. Either it's one-on-one, either it's in the group setting, or either uh, they would like to study on their own. So Can I in one, yeah,
पॉज इंट्रोस्पेक्ट। ये जो हमारा कंपटीशन था, आई थिंक यू हम्म टॉक टू देम कपल ऑफ हम्म टाइम्स। हम्म डिड यू टॉक टू देम इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि जी वो एलाइड को सर्विसेज चाहिए तो आप प्रेजेंट कर दें और समथिंग, ऐसे या इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी ना? या बिल्कुल बिल्कुल। एंड सो दिस इज द पिच दे वर मेकिंग, द वन यू आर मेकिंग नाउ, इज इट सिमिलर? यस यस सिमिलर बिल्कुल। ओके, उनका जो नाइस। ज़्यादा फ़ोकस सिमिलर कह सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपनी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था। वो तो तो आगे वो चल मैंने के आएगा ना आपको भी। हाँ, मैंने टीम के ऊपर ज़्यादा नहीं फ़ोकस किया, बिल्कुल मतलब एक स्लाइड रखी है। अच्छा, नहीं मतलब बेसिक वैल्यू प्रोपोजिशन तो वही होगी ना। टीम, चलो ये तो एक या डायमेंशन है। मेरा मसला क्या हल कर रहे हैं आप, ये तो या उसी अंदाज से बयान होगा ना। या कोई रिकॉर्डिंग है इसकी किसी की? सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। मुझे देना यार एक आधी जो आपने मुझे दी थी ना, ये वही वाली है? वही वाली है, बिल्कुल वही वाली। मैंने तब सुनी थी, आई डोंट रिमेम्बर समथिंग सिमिलर। आई थिंक दिस चार्ट, दिस ग्राफ इन द स्लाइड बिफोर दिस, ये शायद उनकी किसी उसमें से ही आया हुआ है। ये लेकिन ग्राफ इससे सिमिलर है, हाँ जी, स्लाइड सिमिलर है। 3 वाला, हाँ, हुँ, ये हुँ, शायद उसमें से किसी स्लाइड से मुझे देखना याद है। हुँ। बाकी की अभी तक पिच तो नहीं है। चलो खैर, एनीवेज सॉरी टू कट यू। अच्छा, सो कोई इश्यू नहीं। या, So yeah, one to one we will be providing counseling and therapy, and the mode will be online. And we will have live chat. That means that our psychologist will be available in the working hours. And if somebody chooses to have a counseling or therapy session on video call, that will be available. But for example, if someone wants to have some wants to maintain confidentiality and doesn't want to reveal their face or name or anything personal details, they can choose for live chat option where they do not have to reveal their name or any other personal credentials. Moving on, then we will be also be offering webinars, and we the most uh, prevalent that webinars that we do on topics like stress management and enhancing intent and attention, uh, and the various other topics that are very useful for the IT employees. We do tend to give our clients one webinar per month. We we can give more as per the need of our client, but we do recommend one webinar per month as uh, other employees, all the employees are do have a tight schedule. Moving on, so we वेबिनार have ऑन also व्हाट? webinar on different work topics such as stress management workshops and improving attention and improving sleep related issues. So it will be, you can say it will be like a group therapy form. It will be self awareness sessions with a pinch of therapy, self help details. Okay, why Yeah, don't you call it group therapy then? because it will be a mixture of being an informative session with some therapy techniques. Okay, connect So and moving network between who? So this will be connect a network between our different panelists, our psychologists that who will be taking the sessions. So this will give the employees the opportunity to connect with different specialists, and they can share their questions or any other concerns. अच्छा, Okay, let's move on. So we've designed this section especially for those employees uh, who are too shy to ask for help. And actually, there's a statistics shows that around 40% of the employees they prefer improving themselves by learning on their own. So we have created a library for them, which includes lots of videos and books and ebooks uh, where they can learn about um, how to improve their anxiety, for instance, how to think positive. So the topics, so there are plenty of resources available on our platform that they can they that will be available for to them 24/7.
Apart from that, we do provide our clients the analytics, for example, showing our clients that what are the most frequent problems that that their employees are facing. So we do share statistics related to their health and their symptoms. Of course, we do maintain the confidentiality, but we do share the statistics. Moving on to the team, so we have uh, qualified, highly qualified team of psychologists with their degrees of masters and above. They strictly adhere to APA ethical guidelines, and they are highly trained in evidence-based practices like CBT and like different counseling techniques. Um, So one may ask that how would investing into mental health uh, can affect their company or can affect their business. So when employees face psychological challenges, that does come with a cost. So companies do provide health insurance to the employees. So employees facing psychological issues, who face psychological issues, their healthcare cost is expected to rise. They are more likely to drop out, they're more likely to resign in the near future. So there's more likely to be turnover, their productivity reduces, and the reputation of the company uh, is also on risk. For example, if one of the employee considers to self-harm while being on the office premises, so that does put the company reputation on risk. One of the employees does what? So if one of so for example, if one of the employees facing having going through a difficult time, and the employee decides to commit self harm on the Uh, company's premises, so that has that never happened. Yeah, okay. that has Almost never never happened, but happens. it is a risk. Sure. So that does put the company's reputation on risk. So moving forward, by investing into our company, we our statistics shows that a client who take our services, we reduce their healthcare cost by 5% per year. We do reduce their turnover cost. We do reduce their turnover rate by 3%, which also help them reduce cost. There's also a reduction in the absenteeism, which also contributes in reducing the cost. And if the employees are feeling well and their productivity is high, that also promises a repeat business and referrals that also add a financial value to the company. So our basic package starts from $40,000 per year, and in which we give the psychological services to 200 employees. Our services are purely tailor-made for tech industry. We in within that package we offer a webinar once a month. We provide live chat services with our psychologist, and the therapy frequency is 15 per year, and the self-guided access is unlimited, as mentioned earlier. So before jumping on to uh, the services itself, we highly encourage you to take our free trial. So in the free trial, our psychologist will be giving a webinar on stress management. As stress is one of the most prevalent issue in IT industry. And after this session, the employees can expect to feel relaxed and refreshed. And we also share some statistics related to the workshop after after it is done, and that will help you give an idea that how effective our services can be. So that is it from my end. So please let me know when I can book you a session for a free trial. So that would be my end of my presentation. Okay. So here's some feedback for you. I think overall you need like पहली तीन स्लाइडों में ना you will either Mhm. have their attention or you will not.
You Okay. did not have mine, even though Okay. I've been part of this. I kind of dozed off somewhere in there because Mhm. मुझे लगा कि जो problems मेरी हैं मुझे अभी तक उनका कोई जिक्र नहीं नजर आ रहा. You're Mhm. talking a lot about your services and your abilities, Mhm. but what you should be talking about is their problems in words that relate to them. Mhm. एक ना बड़ी मजे की इक्वेशन है ऑफ ट्रस्ट. लेट मी शो यू. किधर से थी शेयर यार. पहली वाली कॉल में ना you really are just trying to build trust. Like no matter what you're selling, if they don't trust you, you know, कोई पर आप कोई कुछ भी कह लें उसका कोई मान ही नहीं है अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं है तो. ठीक है. Mhm. सो देयर इज दिस बुक कॉल्ड द ट्रस्टेड एडवाइजर. और ये कहता है Mhm. कि किसी भी कंसल्टेंट के लिए जो हाईएस्ट रुतबा है ना वो ये है कि कस्टमर कहता है यार दिस इज माय गो टू गाय फॉर प्रॉब्लम्स लाइक दैट. Mhm. यू नो लॉ के मामलात में मैं वो चट्टा साहब से बात करूंगा. चट्टा साहब आई ट्रस्ट चट्टा साहब ओपिनियन ऑन एनीथिंग लॉ रिलेटेड. ही इज माय गो टू गाय. ही इज माय ट्रस्टेड एडवाइजर फॉर लॉ मैटर्स. So you want to be the trusted advisor for psychological, psychosocial problems, right? Soft skills issues, soft issues in the company, whatever you want to call that. Acha, this equation of trust is that it is dependent on your credibility, your reliability, your intimacy to the problem, and your is inversely proportional to your self orientation. Okay, so this is a Mhm. typical engineering way to say something simple is to make an equation out of it. अब आप ये देखो आपकी स्लाइड में क्रेडिबिलिटी कहाँ से आ रही है. लाइक व्हाट गिव्स यू द राइट टू मेक Mhm. दीज क्लेम्स. हु आर यू? Mhm. Who's your company? What background do they have? Why not? Mhm. Who are you to even make a claim like this? You have no credibility. अच्छा, do you speak about reliability? It's like ठीक है, I'm going to give you this stuff. I'm going to give you 200 of my employees. Are you going to be there when I need you? Mhm. Are you going to be available when I need you? Clearly, you don't have a US accent. जब मुझे मसला फंसा होगा will you be there? Mhm. uh, what is your intimacy to my problem? Are you saying it in a language जहाँ मुझे समझ आए कि हाँ हाँ yeah you're talking about exactly the right issue. You're telling me the guy is going to go to self harm. I haven't seen self harm in 20 years. You know, so this guy doesn't look like he knows what our problems are, my priorities are. But I do have a problem कि मेरी meeting में बैठ के the guy has a blowout. या वो मीटिंग में बैठता है और वो बहुत इंगेज नहीं है, डीमोटिवेटेड है. ये तो मैं रोज देखता हूँ. बट ये तो उसने बात ही नहीं की ना. सो इट डजंट लुक लाइक ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम. ही इज नॉट इंटीमेटली अवेयर ऑफ माय प्रॉब्लम. ठीक है. ठीक है. एंड देन सेल्फ ओरिएंटेशन मींस दैट इज द गाय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और इज ही टॉकिंग अबाउट मी. हाउ सेल्फ Mhm. ओरिएंटेड इज ही? सो इफ यू आर not self oriented, if you're listening more than you're saying, Mhm. then that's the customers want to tell you their problem, right? So you spend the Mhm. whole time talking about your competence and your people and your process and all that. Uh, that's just not something that is interesting to me because I live in my world and my world has my problem. I don't care about your competence unless I can see relevance to my problem, right? Mhm. So I would suggest that the number of slides you have on the competence side, इनको आप reduce करके summarize करके एक you just need like one complex looking graphic, you know, some boxes saying कि जी online भी है, self help भी है, ये भी है, वो भी है. Just one high level slide. And if the guy after he's heard your story, he says कि हाँ नहीं नहीं, can you tell me a little bit more about what kind of self help you provide or what kind of therapy you provide, then you jump to your slide at the end and say कि अच्छा ये इसकी तफसील है, ये इसकी डिटेल है, and let me just walk you through Right. more of that. But पहली तीन चार स्लाइडों में that's all you want to give him, and then you want to stop and see whether you have his attention. You know, Okay. if you have him caught with your scenarios,
तो फिर वो ड्रिल करेगा खुद ही उसके अंदर बार। अदरवाइज आप 5-10 मिनट की वो करेंगे, वो कहेगा अच्छा हाँ जी ठीक है, गुड, दिस साउंड्स गुड, और लेट मी थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू। वो एंगेज नहीं होता। आई मीन, यूर अ साइकोलॉजिस्ट, यू probably know how to engage these people. तो this is just a slide. It probably works in school, but you want the वो जो है ना, the KPIs are off. The KPIs are not what the customers will probably have. टेक के अंदर पता, I couldn't relate to any of them. अगर वो हैं भी तो वो बहुत छुपे हुए हैं अंदर कहीं, और मैं उनसे वो नहीं कर पाता, रिलेट नहीं कर पाता। टर्नओवर इज अ केपीआई, श्योर, रीड अ बुक, इट विल टेल यू कि टर्नओवर इज अ केपीआई जिसको ट्रैक करना चाहिए। बट 50 लोगों तक की कंपनी में ना, देर इज नो, वी आर 100-200% कंपनी, वी डोंट नो व्हाट आवर टर्नओवर इज। आई एक्चुअली डोंट नो। और फिर उसमें से कौन सा टर्नओवर जो था वो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, ये तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। There is no process to trigger a psychological evaluation of somebody or even do an exit interview when they go, "Bhai, tu kyun ja raha?" Then he doesn't give me an honest answer most of the time. He's like all goody goody when he's going, or all bitter when he's going. So it's the wrong time to be doing a psych assessment. प्रोसेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, अहमियत भी नहीं है ना यार। यूज केस ठीक नहीं है मेरा ख्याल है। यूज केसेस जो है ना, यू नीड अ कपल ऑफ देम, लाइक 2 or 3, जिसको सुनते साथ ही ना वो ये कहे कि ओ, दिस गाय गेट्स इट, ये तो मुझे रोज ये तकलीफ होती है, और ये बंदा जो है ना, ये ही कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम आई हर्ट विद एवरी डे। यू आर मिसिंग दोज, क्योंकि आपको अपनी ईमेल मार्केटिंग में भी वही चाहिए। वहाँ आपके पास इससे भी छोटी अटेंशन है। वहाँ आपके पास ईमेल की पहली 3 लाइनें हैं, उसने इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी। तो उन 3 लाइनों में एक यूज केस ऐसा बयान होना है कि वो कहे कि भाई, दिस इज इट, I know these problems and this guy has a solution. I want to hear it. Okay. So that is not there. Too many problems. ठीक है, reduce the number of yeah. So too many slides on your My services. services and Yeah, competence. yeah. Okay. वो I think हमने last meeting में शायद discuss किया था कि आप उसको वो कर लो, अपने प्रोसेस के बारे में कुछ बता दो। तो मेरे ख्याल है आपने अच्छा. वहां से यू काइंड ऑफ रिस्पॉन्डेड एंड यू डिड इट, probably went overboard with it, but generally, hang on, let me just do a quick Google search. uh, LS process. Because I just did a search on wellness process, ठीक है। uh, I don't know what these are, but like visually you can see, something like this or something like this: spiritual, financial, environmental, mental, build support, assess policies, yada yada. Now, this looks like something you will do in 3 weeks. This looks like something आपके सारे डेक में से अभी तक समझ नहीं आई कि वायरिंग करते क्या आप। ये है प्रोसेस, है कोई एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड वेलनेस का प्रोसेस है जी, क्या चीज़ है ये देखें ना जी, सिलेक्ट द बेस्ट नीड बेस्ड एम्प्लॉयज, सेट काउंसलिंग गोल्स, कलेक्ट दिस डेटा, इधर से होते हुए ऐसे ऐसे। यू सी व्हाट आई मीन? दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू सी। ये ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। And it didn't take much. All I had to do was Google it. Yeah. तो इस तरह का एक अपना बना लो आप, या कोई copy something, I guess. That's all you need. It doesn't want to know कि जी ये जो स्टेप है ना, ये एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास जो है ना वो ऑनलाइन होगा कि वेबिनार्स होंगे, तो 2 होंगे कि 4 होंगे, तो बाद में देखेगा। अगर आप उसको ये बावर करा देना कि आपको मसला समझ आ गया, you were competent to solve the problem. So if you go by the equation, it was that you heard his problem or you knew his problem. So self orientation maybe. You
sounded trustworthy. हम्म, You had the credibility, your PhD or teacher and so many sessions and yada yada, and that you are showing that you are a reliable resource. आप रात हम्म, को भी available 24/7 है, हम्म, something like that, और हम्म, जब भी क्राइसिस होता है हम उसके 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड कर देंगे, समथिंग लाइक दैट, राइट, टू हम्म, इंडिकेट रिलायबिलिटी। और ये कि आपको प्रॉब्लम की अच्छी तरह इंटीमेटली समझ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी टेक, ऑल दैट। वो आपने मेंशन तो किया है आईटी और टेक, वो अच्छा है, बट द प्रॉब्लम्स नीड टू रिफ्लेक्ट। मतलब वो अगर आपसे ये ठीक है, पूछे कि जी आपके वेलनेस प्रोग्राम में आईटी स्पेसिफिक क्या है, हम्म, क्या आंसर होगा इसका? आईटी स्पेसिफिक काउंसलिंग टेक्निक्स हैं। कहाँ लिखे हुए हैं? ओके, ठीक है। So while you claim to be very intimately aware of my problems, हम्म, it's not showing up in the slide deck, right? हम्म, You can say things like कि हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं, हमने 6 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर, हम ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्ट स्किल एनालिसिस, समथिंग अलोंग द लाइंस के जो उसकी लैंग्वेज से रेजोनेट करे। आपको याद है हमने एक सॉफ्ट स्किल्स की शीट बनाई हुई थी, हम्म, तो उसमें मैंने कुछ ट्रेड्स लिखे हुए थे हम्म, जिनको कि फिर आपने रीफ्रेम किया, आपने कहा जी हमारी वो थीम और पता नहीं कोड और सब कोड कुछ ऐसे करके ठीक होता है, है ना, ठीक है, किया है ना? था। तो यू चेंज द लैंग्वेज, यू सेड हम्म, जिसको आप ये कह रहे हैं ना कॉन्फिडेंस, उसको हमारे यहाँ ये फलाना कोड कहते हैं, हम्म, और जिसको आप फलाना कहते हैं उसको हमारे, सो यू नीड टू गो द अदर वे अराउंड हियर ओके, एंड मेंशन स्टफ जो कि कस्टमर अपनी जुबान से जो प्रॉब्लम बोल रहा है ना जिन अल्फाज में, वो आपको वो यूज करने हैं यहाँ, ताकि वो रिलेट कर सके उसके साथ कि हाँ यार दिस गाय गेट्स इट। हम्म, आप ओके, यू नो yeah, so those are the kind of things I think you will grab attention with and then kind of build on that. So 3-4 slides, process, one high level slide is enough, बाकी वो डिटेल मांगे तो उसमें चले जाएं। अच्छा, लास्ट bit of advice on the हम्म, presentation skills, like हम्म, look at a couple of these pitch deck. This is not a pitch deck, but look at some of the pitch deck presentations जो हैं, हम्म, तो वहाँ आपको एक थीम नज़र आती है on stories. हम्म, People start with a story. हम्म, Yeah, there's something like uh, psychology has always been, a passion of mine because I had a friend who, हम्म, I don't know, committed suicide. I had a accident, whatever inspired you to get into this field, right? And I have friends in the IT sector. I had friends in the IT sector, and I could see हम्म, that these problems have a grave impact there. So let me tell you a little bit about John हम्म, of Allied Consultants, and he was having serious issues, and he was having this issue and that issue and that issue. These issues are exactly what the other guy is, noticing. So confidence के issues थे, वो timid था. You can actually pick one of the guys from Allied, just talk about him, anonymize him or something, हम्म, uh, and narrate his story हम्म, and tell him he was anxious था and he was known as a very productive employee. But वो असल से अंदर से तो he was suffering badly, and then one day he had a nervous breakdown, yada yada yada. उस्मान जमील की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको. But pick a story or make one up, who cares? Uh, Start with that, I would say. That will really catch somebody's attention. Uh, ओके, एक से 1.5 मिनट में you just ठीक है, tell a story that grabs him. अभी वो बड़ी मंडेन सी बोर सी, ऐसे लगता है लेक्चर दे रहे हो कोई हाँ, हाँ, ओके, स्कूल वाला। ये ठीक हो गया। यूज केसेस पे यार आई थिंक वी नीड टू, गूगल वाले ना वे कहते हैं हम ऑब्सेस करते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में, आई थिंक वी नॉट डूइंग इनफ ऑफ दैट। हम्म, और वो सिक्लिकल प्रॉब्लम कि आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं है अभी बात करने को,
तो आपको उनकी हम्म प्रॉब्लम का बहुत कुछ पता नहीं है, तो इसलिए आपके पास हम्म बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं है, तो फिर आप सो गोज अराउंड. But you need a baseline good enough based on your 3-4 years of experience with us, right? उससे ही आपको बहुत चीजें समझ आ जाएंगी. हम्म And then end maybe with some questions. Do you have anybody in the company who goes to counseling? What do they go to counseling for? What are the results of that counseling? Do you feel there is something that your people need help with, which your staff is not equipped to provide? It's हम्म not technical training. It's not business training. It's something else. Do you notice something like that with your staff? Some of these provoking questions will sell. आपने वो कोर्स देखा, क्वेश्चंस दैट सेल वाला? कौन सा वाला, सॉरी, सॉरी? क्वेश्चंस दैट सेल. नहीं। Send that to you. It's on our YouTube. But the idea here is कि a good question, if it prompts the customer to tell you something that is their problem, you are very close to selling something. हम्म सो अगर मैं बेसिकली सॉरी, मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ. सो अपनी पिच डेक के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे डालूंगा, एंड में, हाँ, एंड पे. अच्छा, एंड पे डालूंगा मैं. या एंड when you दिस when इज. you've done your pitch, which is 3 or 4 slides, you tell your story, whatever, right? And then you've given him a basic idea of who you are, and now you're like, all right, tell me your problems. Just here you're a psychologist, you do this naturally, right? या. You ask some open-ended question and you're like, अच्छा चल खोल दिल से जाते. अगर आप सीईओ साहब का दिल नहीं खुलवा सकते तो बाकियों का कैसे खुलवाएंगे? हम्म सही. ओके. What's the most detailed study you have on the problems of software people other than that pie chart or graph? प्रॉब्लम्स ऑफ, सॉरी. आईटी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इस पे हाँ, सबसे डिटेल्ड चीज क्या है आपके पास? आई थिंक ये जो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना, जो फेज 1 वाली स्टडी थी, उसके अंदर मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया था कि जो अलाइड कंसल्टेंट के अंदर प्रॉब्लम है और जो पूरा लिटरेचर कह रहा है कि बाकी और कंपनीज में दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. तो वो एक ओवरऑल मुझे चार्ट पता लग गया था कि वो क्या 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 प्रॉब्लम्स हो सकती है. इस पे कोई बुक पढ़ी है, क्या चीज है ये? नहीं, रिसर्च उस पे मैंने जो कंडक्ट की थी रिसर्च, उसकी बात कर. हैव यू रेड एनी बुक्स ऑन द टॉपिक? आई हैव रेड लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन इट, क्योंकि वो उस तरह का टॉपिक है कि वो उस पे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन कंपैरिजन टू अ बुक. सो आई एम जस्ट गूगलिंग दिस एंड आई कैन सी psychological well-being at the workplace, psychological practical guide, books on workplace well-being and mental health, top 10. इसमें ना वो बहुत अच्छे है वैसे, ओवरऑल जो वेलबींग के ऊपर है, नॉट स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री के ऊपर, तो आई डोंट थिंक कि कोई, जहाँ तक मुझे याद है, रिसर्च पेपर से बुक कोई नहीं थी. और नहीं, वैसे बहुत वेलबींग बुक्स के ऊपर हैं, एक नॉट amazon भरा नॉट हुआ है. हाउस एक बंदा है, उसने बहुत काम किया हुआ है. उसकी बुक्स वगैरह मेरे पास हैं और वो मैंने पढ़ी हुई है. यार, I think I definitely need some of these books. I tell you, even like book summaries मिल जाए ना आपको तो you can pick up shit from this which is great for bullshit. हम्म देखो ना, मैं sorry, I'm not sharing. I picked a link and I skimmed through it. So 9 books on the topic, right? Well-being at the workplace, how to build a resilient and thriving टीम. team.
ठीक है. सो दिस टाइटल इज टेलिंग मी कि resilience और thriving जो है ये प्रॉब्लम है. एज इफ के सीईओ को पता है कि मेरी टीम रिजिलियंट नहीं होती. आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि रिजिलियंट का मतलब क्या होता है. मेरा ख्याल है रेजिस्टेंट टू फेलियर आई थिंक इज व्हाट हाँ resilient हाँ, means. तो ability to get thriving, back up. yeah, so thriving may be also something along those lines. So if they've had a recent failure or something or a string of failures, then they want to build some resilience in their team. If they are trying to grow, they might be trying to build entrepreneurship within the culture of the company. और वो जाहिर है culture of the company itself is a psychological psychosocial problem, right? हाँ हाँ, बिल्कुल uh, बिल्कुल। तो ये जो लैंग्वेज है ना कल्चर की और एंटरप्रेन्योरशिप की और इंट्राप्रेन्योरशिप की, ये सीईओज में बहुत कॉमन है. ये उनके लिंगुआ में शामिल है, उनकी प्रायोरिटीज में शामिल होती है. तो उसमें से हमें कांटा जोड़ना चाहिए बायर को. अब ये बुक का अगर आप समरी ले लो ना कहीं से, जैसे लेट्स डू दिस वन, वेल बीइंग एट वर्क, जिम क्लिफ्टन. बैठ जाओ. ठीक है, 9 minute summary, free, and you can probably pick some pointers out of this. Generally, जनरली ऑथर खुद भी आके ना कहानी सुना रहा होता है. अभी अपनी जुबानी सुनाएगा ना, आपको बहुत सारे आइडियाज पिक करने को मिल जाएंगे. देखो ना, फाइनेंशियल वेलबींग, इधर आओ यार. फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल एंड मेंटल हेल्थ, 5 एलिमेंट्स, स्पिरिचुअलिटी. तो जनरली तो वेलबींग के ये थीम्स है ना. अब हम थोड़ा सा, हमने ये लैंग्वेज भी नहीं इस्तेमाल की वेलबींग वाली वैसे, बाय द वे, which again I think is something the CEO might be familiar with and used to hearing. You know, if he says कि जी मैं wellness की कंपनी हूँ, suddenly gets a lot of the context here, right? Context उसको एकदम मिल गया कि कौन है अनसब साहब, ये वेलबींग की ये कंपनी है. वरना पूरा पिच सुन के ये समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली कि ये करते क्या हैं. So even if you just say well-being and don't talk about anything else, then the rest of it is, and you can specialize this. You can say psychological well-being, right? And not talk about anything else. So I would suggest like you pick the top 9 books from many of these sort of Google searches and just go through summaries. तो आपको उनकी समरी से ना वो पॉइंटर्स मिलने लग जाएंगे. वो कहीं ना कहीं आप अपने डेक में डाल लो, अपने डेक के 2 टुकड़े कर लो. पहली 4-5 स्लाइडें वो हैं जो हुक करके हमने इंगेज करना है उसे, और बाकी सब मिसलेनियस चीज़ें हैं जो जब वो पूछेगा तो हम कोई उसको और चीज़ें अपनी इल्मियत की झाड़ देंगे उस पर. लेकिन ऑल द इल्मियत नीड्स टू बॉयल डाउन टू दोज फर्स्ट 2 or 3 स्लाइड्स जहाँ वो सुन के कहे कि जनाब he this guy gets it. Yeah, I am intrigued by his offer. There isn't any risk. This guy gets it. वो जो पैकेज भी डाला हुआ है ना एंड में आपने कि जी वो 1 महीना करूंगा तो ये है तो वो है, नॉट रेलिवेंट. बिकॉज ऑल ही केयर्स अबाउट इज कि अभी तुम अभी क्या करना है. अभी तो आपने पायलट प्रोजेक्ट करना है. दिस इज नॉट फ्री, दिस इज अ डिस्कवरी. वो आपके ऐसे लगता है कि प्रोडक्ट है जिसका आप फ्री, व्हाट डिड यू से, फ्री वेबिनार और समथिंग यू कॉल्ड इट. या सो द आइडिया वाज, ये मैं आपके साथ अभी मैंने लिखा हुआ था, डिस्कस करना था. सो द फर्स्ट आइडिया वाज कि मैं 1-2 हफ्ते का कुछ उनको कोई डिस्कवरी कॉल या कुछ करके दूंगा. सो व्हेन आई थॉट अबाउट इट, आई थिंक कि मैं अगर उनके साथ एक वेबिनार ही कर लूं, उसके अंदर मैं इफेक्टिवनेस शो कर सकता हूँ. क्योंकि अगर हम लेट्स से कि 2 वीक का 3 वीक का ट्रायल दें No, और no, no, उसके no. You don't want to do that. See, what you're saying is I have assumed you have a problem with stress, या and you've lost trust at that point.
What you want to be saying is, I don't know what your problem is. I can fix a lot of problems, but I don't know what your organization's problem is. So मेरा वो जो रास्ता मैंने अभी आपको प्रोसेस दिखाया है, उसके पहला स्टेप ये था कि मैं आपके लोगों से पहले मिलके आपकी एचआर वालों से मिलके कुछ असेसमेंट करूंगा, फिर मैं एक दो लोगों के साथ सैंपल टेस्ट करूंगा, उससे फिर मुझे अंदाजा होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे प्रेवलेंट प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं आपके साथ 3-4 हफ्ते का एक पायलट प्रोजेक्ट करूंगा टू डेमोन्स्ट्रेट द एफिशिएंसी। अब आएगी आपकी ये जो वेबिनार है स्ट्रेस का, इफ इट इज दैट वी नीड टू फिक्स। और फिर उसके बाद इफ यू स्टिल आर हैप्पी विद माय सर्विसेज, देन देयर आर सब्सक्रिप्शंस यू कैन बाय इन विच वी कैन कवर द होल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ईयर। बट वो कि जब हम बड़े होंगे तो फिर हमारे 2 बच्चे होंगे, तो फिर जब उनकी शादी हो जाएगी तो फिर हम फलाने पार्क के बेंच पे बैठा करेंगे, ओ भाई यार पहले जरा पहली डेट ते मुक लैंड दो। हम्म ओके ओके ठीक है, मेक सेंस। सो द फर्स्ट जो हम 2-3 वीक करेंगे वो डिस्कवरी कॉल के अंदर, we just going to find out कि what is the most prevalent problem within their organization is. That's our job to find out. और करके फिर या एक पायलट प्रोजेक्ट पे उनको ऑफर कर देंगे कि भाई हम आपके ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करेंगे। उसमें कि 2-4 एम्प्लॉयज के 2-3 सेशन कर लेंगे एक महीने के अंदर और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट शो कर देंगे। श्योर ठीक श्योर। है, ओके, पहली गॉट इट। चीज तो ये ना कि आप प्रॉब्लम ठीक से डायग्नोज कर रहे हैं कि नहीं, उससे हम्म वो इत्तेफाक करे कि हाँ ये मसला मेरा, यही मेरा मसला है। हम्म उस ये जो एंगेजमेंट्स होती है ना, फिर ये डिस्कवरी वाली, ये हम्म एक तरह का आप समझो आपके पास मौका होता है टू मार्केट योर सेल्फ। सो इफ यू हम्म आर आस्किंग रियली गुड क्वेश्चंस, हम्म everybody involved is walking away from the impression कि यार this guy knows what he's talking about, ये बिल्कुल वही सवाल कर रहा है जो हमें मसला था। हम उसने जी मैनेजर से जाके मुलाकात की, मैनेजर से कहे तुम्हें क्या मसाइल आते हैं, तो अब वो ये पूछ रहा है कि यार अच्छा तुम्हें तुमने हैव यू नोटिस्ड एनी प्रॉब्लम्स विद स्ट्रेस, हैव यू सीन एनी पीपल जिनमें व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स वुड यू लाइक टू बिल्ड इन देम, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू योर कस्टमर्स लाइक टू बिल्ड और सी हम्म इन योर कंसल्टेंट्स, व्हाट इज मिसिंग। अब वो बोलेंगे अपना मसला, और जब वो बोलेंगे और आप डॉक्यूमेंट करके वो 2 हफ्ते बाद उनको सीईओ साहब को सुनाओगे, तो नीचे कोई डिनाई नहीं कर सकता, उन्होंने तो बताया होगा। उन्होंने तो बताया एग्जैक्टली, उन्हीं का वो रिफ्लेक्शन, उन्हीं की रिफ्लेक्शन है। हाँ, सो अब आप ये बताएंगे बैठ के कि जी ये जो आपके मसले थे, ये असल में जो साइकोलॉजी में ये फलाना सब्जेक्ट कहलाते हैं, उनका ये इलाज होता है, सो आई रेकमेंड फलानी इंटरवेंशन, यू डन दिस विद अस राइट, हम्म सो यू नो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, इट्स हम्म नथिंग न्यू। बट अगर आप बगैर प्रॉब्लम को समझने के मौके के टुल्ला मारो ना, तो वो टुल्ला ही है, वो कहेगा हमें तो स्ट्रेस का प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, हमारा प्रॉब्लम तो एंटरप्रेन्योरशिप है। हम्म क्योंकि वो उस वक्त उस शाम को उसका मसला ये था कि कस्टमर ने काम दे दिया और पीछे लोग करने को तैयार नहीं है। तो आज तो उसके जहन में ये है कि बस दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप ही सबसे ज़रूरी बात है। कल जब ठीक है। उसका एक बंदा को फकअप मार देगा तो फिर कुछ और कह देगा वो। हम्म बट somebody in HR और द मैनेजर्स विल बफर दिस एंड से कि यार नहीं नहीं देखो, ये तो आज का मसला है ना, जनरली हमारा साल में ये मसला होता है। हम्म हम्म, ओके। और जो मेन जो प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर मतलब नीचे कहीं पे ये सारा जो ROI वगैरह वो सबसे एंड पे डाल दो, तो हम बेसिक अपना श्योर। फर्स्ट जो ट्रस्ट है और सर्विसेज और ट्रस्ट और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, एंड दे इफ दे डू आस्क अबाउट लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, फिर हम उसको वी कैन पुल द स्लाइड अप एंड वी कैन शो। देखो मैं इफ अगेन I'm being a little biased about my own view, I'm assuming कि सारे कस्टमर मेरे जैसे ही होंगे, that is an assumption. But do you remember the first time we met? हम्म I told you what my organization's problem was. I don't know if you हम्म remember that conversation. हम्म Do you remember that conversation? I'm trying to recall. You can say no if you don't remember. I'm not a memorable guy. I don't actually, मैं इसको याद करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं याद आ रही अभी। I told you, I'll tell you again, कि I run a software company, हम्म and you can narrate this in third person, right? कि somebody came to me and he said that he ran a software company. He said that
they are a people oriented organization. Their primary asset are the people. And he said that they are great technical resources. We assess them, evaluate them. Technically, they are a great Python developer, great PI developer, whatever. But we can see clearly that the customer's unhappy or the employee is unhappy or that he's not performing as good as we think he can or that we expected we can. And we can't pin it down on anything technical, anything environmental or anything technical. So it must be something that is not technical and that we feel it is something psychological, but we can't exactly put our finger on it. We need help trying to diagnose what the problem is exactly. And so we've gone around looking for an organizational psychologist who can help us diagnose this and drill into it. So he said, this guy, this customer of mine, he said, let me give you a few examples. And he gave me an example of some guy named Usman, whose problem was anxiety. And he was an amazing developer, and yada, yada, yada. And then this other guy who had gender issues, who had, and this other guy who had, and the organization had no clue how to deal with this because they are engineers. They don't know how to fix people. They know how to fix computer, but they don't know how to fix people. And that's where I got involved and I got very inspired when I met these people. I thought this is a problem worth solving. And for the last 5 years, I have worked on these problems and formed a company to help other people solve these problems. That's a story. तो अब वो बोलेगा फिर वो बताएगा आपके क्या मसले हैं so on and so forth. I don't know if you like the story, but that's the नहीं नहीं story आई I थिंक gave you. नहीं That's the आई थिंक story I वो gave you. आई लव द आइडिया इटसेल्फ बिल्कुल मैंने एक्चुअली 3-4 साइकोलॉजिस्ट को ही सुनाई थी इसलिए वो मुझे भी याद हो हम्म गई थी. Because they all ask कि अच्छा like what kind of problems do you see? And I would say this and then they would go like yeah yeah. You need to meet them to figure out कि क्या मसला है. हाँ So आप इसको थोड़ा सा एक और आइट्रेशन देके रिफाइन कर लो. I will hook you up with a friend. ठीक है He has a company of I think around 200 people now. हम्म Uh, I don't know if they have an HR, but I can probably get you a meeting with the CEO or the. ठीक है I think the head in Pakistan is probably an interesting guy. I know he has actually gone to a therapist a couple of times and is a big proponent of everybody should go to therapy once in their lives हम्म to sort things out. I don't know who he went to, but he's a big proponent of it, right? So I think he'll be an interesting possible target. मैं उसको बता दूंगा कि जी ये अभी pitch अपनी develop कर रहे हैं. So you can ठीक see है if your pitch has resonance, they can give you another opinion on this and try and ओके improve this. या 4-5 actual लोगों से मिल के करोगे ना तो फिर वो बेहतर हो जाएगी. बेहतर हो Record it जाएगी every time so you can hear yourself and their feedback on it. ठीक है श्योर श्योर ठीक है तो अब अगली iteration कर लो and then I'll hook you up. ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको बेहतर करके और फिर एक दफा आपको भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इसको हाँ दूसरा ठीक है हम मीटिंग we में need to आई टेक्स्ट यू हम मीट अगर आपके पास टाइम होगा तो मीटिंग कर लेंगे नहीं तो मैं आपको रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा however you can meet it sure what yeah I think that's probably easier. Yeah ठीक है that's probably easier. But I think we're kind of very zoomed in on the intro. But really, we should maybe also be looking at the general structure क्योंकि as you refine your intro, इस वक्त parallel में email campaign शुरू की जा सकती है. हम्म उसका ramp up period कुछ 8 हफ्ते का होता है. हम्म तो by the time you're done refining this, वो वहाँ से भी कुछ मीटिंग आनी शुरू हो जाएंगे. You can see that. और दूसरी चीज जो मेजर गैप है वो ये है कि डिलीवरी कैसे होगी अगर ये आ ही गया. या तो फिर ये टारगेट ये है कि बस एक असाइनमेंट आ जाए ताकि हम अगले 3-4 महीने वही भुगत सकें. हम्म और अगर इससे कुछ बड़ा है तो फिर हमें कम से कम एक आधे दो कोई कंसल्टेंट कोई
कोई टीम एड हॉक सी अपने साथ चाहिए जो एंगेज की एग्जैक्टली। जा सके ऐसे मौके पे। मे बी यू डन दैट थिंकिंग, आई डोंट नो, बट जी जी बिल्कुल, बिजनेस। मैंने कुछ लोग भी मिलके सोचे हुए हैं, और कल भी मैं वेबिनार के लिए स्पेसिफिकली ना लोग हंट कर रहा हूँ कि अगर यूएस से कोई हमें लोग मिल जाए जो कि इस चीज में स्पेशलाइज करते हैं, और आवरली बेसिस पे हम उनमें उनके साथ कोई डील कर लो कि मैं आपको फ्यूचर में वेबिनार्स दूंगा, सो यू विल बी हाँ ऑन। हाँ, या ये एंड डू यू हैव यू सीन अ सिमिलर वेबिनार टू द वन you're presenting बाहर का? आई हैव सीन, मैंने ऑनलाइन सर्च किए हैं, लिंक्डइन पे सर्च किए हैं लोग जिनकी ये स्पेशलाइजेशन है, साइकोलॉजिस्ट हैं और आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मैंने श्योर, वेबिनार एग्जैक्टली कोई देखा नहीं है, लेकिन मैंने लिंक्डइन पे लोग सर्च करके रखे हुए हैं। वो तो ठीक है, वो तो ज़रूर कर लो आप, अच्छी बात है। लेकिन हम्म। एक होते हैं ना पब्लिक स्पीकर्स जो बड़े या इंटरेस्टिंग तरीके से वेलनेस के बारे में बोलते हैं, लाइक हु इज द नंबर वन इन्फ्लुएंसर ऑन वेलनेस? नॉट दैट हाँ। माइंड वैली शिट, बट द sort of genuine. Have you seen the नहीं, mind आई डोंट valley नो। shit? This is हाँ। so bad. हम्म, The aura और vibes और magnetism और हम्म, attraction और क्या हम्म, कहती थी कल वो कि मैंने अपना मैंने अपना पता नहीं क्या ठीक कर लिया, सम लाइक मैग्नेटिक पता नहीं क्या ठीक कर लिया, तो उसके बाद मैं मिलियनेयर बन गई, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू बिल्ड दैट ओरा। चलो, इज नई दैट कोई नॉट? पक्की है। ये नई पक्की वेलनेस है ना, पोजीशनिंग कोई। this wellness shit you want to just steer away from, right? And हम्म, जो आपकी अपनी है ना, which I at least found very interesting when we initially met, is कि जी data oriented, हम्म, result oriented, empirical बंदा है, none of the nonsense mumbo jumbo, you know, हम्म, like you said कि वो CBT evidence based वो है, हम्म, this is not just bullshit. तो हम्म। yeah, ठीक है, चलिए, लेट मी वर्क ऑन दिस, और फिर इंशाल्लाह मैं इसी को करके ना, इसी पे काम कर रहा हूँ आजकल तो मैं, तो जैसे करके फिर मैं आपको sure, अपडेट करूँ। हाँ ठीक है, I think ये step one है, and then there's a couple of other steps जो we can talk about when you get to them. ठीक है, हाँ, मैं मेरा ख्याल है ये पिच एक दफा रिफाइन हो जाए, ये गुड को हो जाए, तो फिर वी कैन फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ Yeah, नेक्स्ट स्टेप एज वेल। मैंने वैसे yeah. कुछ डिजाइन करके रखे हुए भी हैं, वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, फिर आप उस पर फीडबैक मुझे दे दीजिएगा। क्या चीज़? नेक्स्ट स्टेप्स जो है ना, कुछ मैंने एक प्लान भी बनाया हुआ है उसका, अच्छा, तो ये है कि अच्छा, फिर अच्छा, वो मैं ठीक। आपके साथ शेयर कर लूंगा, फिर आप मुझे उस पर फीडबैक दे दीजिएगा। हाँ ओके। यार, वो दैट्स अ होल कॉन्वर्सेशन भी हैड। मैं अपनी साइड पे बड़ा उलझा हुआ हूँ कुछ चीज़ों में, तो मैं आई हैव नॉट बीन एबल टू कम अराउंड टू इट, लेकिन वो होपफुली बाय द टाइम यू डन विद दिस हमारी कुछ V2 की वेबसाइट तैयार हो गई होगी, एंड देन I'll शेयर विद यू कि हम ठीक है। एक नया प्लेटफॉर्म बनाने लगे हैं। जस्ट द शॉर्ट ठीक वर्जन है। ऑफ इट इज़ कि V2 यानी वर्जन 2 ऑफ एलाइड, आई एम गोइंग टू हम्म, लीव एलाइड एंड स्टार्ट हम्म, दिस, is going to be an accelerator for professional services startups. Do you हम्म। know what an accelerator is? जो कि आपने बताया था, वो जो फर्स्ट वेंचर इन्वेस्टमेंट, आई थिंक द वर्ड दैट यू यूज्ड। You know what an incubator is, right? यस, इनक्यूबेटर, यस। So imagine we are an incubator for professional services startups. के लोग idea ओके। लेके आते हैं and we help them turn that into a business. ठीक है? And we ओके। do that by keeping some equity in their companies. हम्म, और उस equity से जो return आएगा, यानी जब आप बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, कामयाब हो जाएंगे, तो आप पैसे कमाएंगे, उन हम्म, पैसों में से कुछ पैसे V2 के होंगे। तो हम्म, V2 उन पैसों से फिर अगले एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा। इट्स अ हम्म, ट्रस्ट, इट विल नेवर मेक अ प्रॉफिट, इट विल जस्ट हम्म, कीप डूइंग दिस, सो हम्म, इट हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन योर सक्सेस। दैट्स द हम्म, आइडिया विद V2। अभी हम ये हम्म, करते हैं, लेकिन हम बहुत क्या कहते हैं, इनफॉर्मली और हाफ हार्टेडली करते हैं। हम्म, तो वी ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू अ लीगल एंड सस्टेनेबल स्ट्रक्चर। तो हम्म। आई विल टेल यू मोर व्हेन वी गेट टू दैट पॉइंट। ठीक है, ठीक हो गया। ओके जी, आई विल सी यू चलें, लेटर। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।